Assalamu alaikum. Hello. Hello and namaste. Welcome to the second program of Hindi Urdu Bol Chaal. If you were with us for the first program, those greetings will be familiar to you. You will also know how to ask, how are you? Omar, aap kaise hain? मैं ठीक हूँ. I'm fine. मैं ठीक हूँ. स्नेह जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ. I'm fine too. Today we'll check up on greetings and move on to look at the language you need to talk about yourself, your job, and the place where you live. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका क्या हाल है? ठीक है. आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ. आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ. आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ. Hello राम भाई. हेलो जी, क्या हाल है? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ. क्या हाल है? How are you? ठीक है. I'm fine. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है? ठीक है. हेलो जी. हेलो जी. क्या हाल है? ठीक है. क्या हाल है? ठीक है. क्या हाल है? ठीक है. क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ. आइए. You may be wondering what Bol Chaal means. Well, it means conversation. Or to put it another way, it means everyday spoken language. Hindi Urdu Bol Chaal then means conversational Hindi and Urdu. In this series, we're learning to speak two languages, Hindi and Urdu. In the spoken form, Hindi and Urdu have a lot in common. They share the same pronunciation, grammar, and a lot of words. So learning two languages at the same time isn't as difficult as you may think. In this program, we'll be looking at the language you need to talk about yourself, your job, and where you live. To ask someone what their job is, you say, "Aap kya kaam karte hain?" Hain means are. Remember, that's a nasalized sound. आप क्या काम करते हैं? What is your job? आप क्या काम करते हैं? उमर जी, आप क्या काम करते हैं? मैं एक्टर हूँ. I'm an actor. मैं एक्टर हूँ. स्नेह जी, आप क्या काम करती हैं? मैं टेलीविजन प्रेजेंटर हूँ. I'm a television presenter. आप क्या काम करती हैं? मैं टेलीविजन प्रेजेंटर हूँ. I'm a television presenter. When I'm talking to Sneh, I say karti. When she's talking to me, she says karte. Can you guess why? We'll come back to that later in the program. To say what you do or what your job is, you say मैं, then the word for what you do, which is often a similar word to the one in English, and then whom. How do these people reply to आप क्या काम करते हैं? And now the answers. A doctor, a teacher, a nurse. How did you get on? आप क्या काम करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ. I'm a doctor. आप क्या काम करते हैं? मैं टीचर हूँ. I'm a teacher. आप क्या काम करती हैं? मैं नर्स हूँ. I'm a nurse. Anita Bala spoke to some people in Birmingham and asked them their names and what they do. Anita asks, first of all, what is your name?
आपका नाम क्या है? Then what do you do? आप क्या काम करते हैं? आपका नाम क्या है? आप क्या काम करते हैं? Listen for the questions and the answers. Who does what job? हेलो जी, हेलो जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुरुषोत्तम भारद्वाज है। आप क्या काम करते हैं? मैं यहाँ टीचर हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिनेश शाह है। आप क्या काम करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेशम सिंह हीर है। आप क्या काम करते हैं? मैं बस ड्राइवर हूँ। Did you hear Anita's questions and their replies? Sometimes it's not easy to pick up someone's name the first time you hear it. Listen for the names of the bus driver, doctor, and teacher. हेलो जी, हेलो जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुरुषोत्तम भारद्वाज है। आप क्या काम करते हैं? मैं यहाँ टीचर हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिनेश शाह है। आप क्या काम करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेशम सिंह हीर है। आप क्या काम करते हैं? मैं बस ड्राइवर हूँ। The doctor's name was Dr. Shah, but the bus driver is called Resham Singh Heer. Some Sikhs do have a name after Singh, and the teacher is Mr. Bardwaj. In the Hindi Urdu Bolchal course book, which goes with this series, Unit 2 is about asking someone about their job and where they live, and talking about yourself. Each new phrase has a dual translation system. First, there is the Hindi and Urdu. आप क्या काम करते हैं? Then there's a word for word translation. You, what work doing are. And then a natural English translation. What is your job? Which gives the meaning of the phrase in context. आप क्या काम करते हैं? Sometimes when learning a new language, it's helpful to see the nuts and bolts of the language. Why words go together the way they do. In fact, how the language works. The word order in Hindi and Urdu is not the same as in English. Often the verb comes at the end of the sentence. If you want to say what your job is in Hindi and Urdu, you put the verb at the end. मैं television presenter हूँ. Here the verb is हूँ, am, and it is at the end of the sentence. When asking the question, what do you do? आप क्या काम करते हैं? Both parts of the verb करते हैं, doing are at the end of the sentence. आप क्या काम करते हैं? The verb ending also changes depending on whether you're talking to a man or a woman. At the beginning of the program, Sneh asked me, आप क्या काम करते हैं? Because she was talking to a man and she used the masculine form of the verb करते. But if I ask Sneh what her job is, the ending of the verb changes to the feminine form करती, because I'm talking to a woman. आप क्या काम करती हैं? आप क्या काम करती हैं? So, this is how the language works. In Hindi and Urdu, the word order is different to English, and the verb is usually at the end of the sentence. And when talking to a man to ask what his job is, you use the masculine form of the verb करते. आप क्या काम करते हैं? And if on the other hand you ask a woman what she does for a living, you use the feminine form of the verb
करती। आप क्या काम करती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय है। आप क्या काम करती हैं? मैं नर्स हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। क्या काम करते हैं? मैं दुकानदार हूँ। Ask these people what their job is. आप क्या काम करती हैं? Did you get the question right? आप क्या काम करती हैं? Here are the answers. मैं पुलिस वुमन हूँ। मैं फिल्म स्टार हूँ। मैं क्रिकेटर हूँ। You're at a party and you meet two Hindi and Urdu speakers. How do you find out what their names are and what they do for a living? How do you ask him, what is your name and what is your job? आपका नाम क्या है? आप क्या काम करते हैं? How do you ask her, what is your name and what is your job? आपका नाम क्या है? आप क्या काम करती हैं? So far, we've looked at the language you need when talking about yourself and your job. If you want to ask someone where they live, you say, आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? Once again, you would use the masculine form of the verb रहते when talking to a man and the feminine form रहती when you're talking to a woman. Omar, आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? Because I'm talking to a man, I use the masculine verb रहते. मैं रॉचडेल में रहता हूँ. I live in Rochdale. मैं रॉचडेल में रहता हूँ. स्नेह, आप कहाँ रहती हैं? Because I'm talking to a woman, I use the feminine verb रहती. मैं लंदन में रहती हूँ. I live in London. You may have also noticed the replies. I asked Sneh, आप कहाँ रहती हैं? To which she replied, मैं लंदन में रहती हूँ. However, when Sneh asked me, आप कहाँ रहते हैं? I replied, मैं रॉचडेल में रहता हूँ. With मैं, you use रहता if you're a man and रहती if you're a woman. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं हॉल ग्रीन में रहता हूँ। वहाँ आप क्या काम करते हैं? मैं दुकानदार हूँ। बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं बालसल हीथ में रहता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते जी, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। बैठ जाइए। शुक्रिया। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम अविनाश दत्ता है। आप कहाँ रहते हैं? हैरो में। Anita Bala spoke to people in her home city of Birmingham. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप कहाँ रहती हैं? मैं बोर्ड्सली ग्रीन में रहती हूँ।
आप कहाँ काम करती हैं? बर्मिंघम में। बर्मिंघम में? यहाँ आप क्या काम करती हैं? मैं वकील हूँ। वकील? ओह, बहुत अच्छा। तो फिर मिलेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश पवार है। आप कहाँ रहती हैं? मैं हैंसवर्थ में रहती हूँ। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमला बंगर है। आप कहाँ रहती हैं? मैं हैंसवर्थ में रहती हूँ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आप कहाँ रहती हैं? मैं एजबस्टन में रहती हूँ। आप क्या काम करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय शाह है। आप क्या काम करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं बर्मिंघम में रहता हूँ। हेलो जी। हेलो जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुरुषोत्तम भारद्वाज है। आप क्या काम करते हैं? मैं यहाँ टीचर हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं हैंड्स ऑफ वुड में रहता हूँ। You can now ask someone where they live, but you might want to know where they live more precisely. Omar lives in Rochdale, but where in Rochdale? To ask that in Hindi and Urdu, you say, "Aap Rochdale में कहाँ रहते हैं?" कहाँ means where. आप Rochdale में कहाँ रहते हैं? King Street पर, on King Street. स्नेह, आप लंदन में कहाँ रहती हैं? Richmond Road पर, on Richmond Road. Vijay is going for an interview at a neighborhood office. She's expecting some questions about her job and where she lives. Listen for her answers. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय है। विजय, आप क्या काम करती हैं? मैं नर्स हूँ। नर्स हैं। आप कहाँ रहती हैं? मैं सटन में रहती हूँ। सटन में कहाँ? लिचफिल्ड रोड पर। लिचफील्ड रोड पर। In English, we always use the words in, on, and from before the place name. For example, I live in Rochdale, on King Street. I come from Lancashire. Because in, on, and from all come before the name of the place, they're called prepositions. In Hindi and Urdu, in, on, and from come after the place name. To say that you live in Rochdale, you say Rochdale में. To say you live on King Street, you say King Street par. And to say that you come from Lancashire, you say Lancashire se. So the words par, me, and se all come after the place names and are therefore called postpositions. In Program 1, we looked at the origins of Hindi and Urdu as an Indo-European language. But how did Hindi and Urdu become the national languages of India and Pakistan?
imagine you were travelling by train through cities, towns and villages from West Punjab in Pakistan, eastwards through northern India, all the way down to Calcutta in West Bengal and then on to Dhaka, the capital of Bangladesh. As you moved from one place to the next, you'd find differences in the language between neighbouring towns and villages, but people still being able to understand each other. And if you kept moving, all these differences would add together so that when you got to here, Uttar Pradesh, the local language would be very different to where you started from. So, there's lots of local languages spoken inside the home and local communities, but some of them have become standard regional languages with their own script and literary traditions. For example, Punjabi, Gujarati and Bengali, all languages which are spoken in Britain today. But in addition to these local and regional languages, there are also link languages, which are more widely understood and you're likely to hear in use anywhere in Pakistan and northern India, and occasionally in Bangladesh. The common spoken link language of the marketplace used to be called Hindustani, another name for a spoken form of Hindi or Urdu. But the constitutions of India and Pakistan don't recognize this term. Hindi, however, is the official national language of India, and Urdu is given the same status in Pakistan. So far, we've looked at the Hindi and Urdu you need to ask someone where they live and what they do for a living. You will remember that when you meet someone, you usually greet them by asking, "How are you?" "Aap kaise hain?" And the reply is, "Main theek hoon." You remember Anita Balla went to meet a bus driver in Birmingham and talked to him about what he does and where he lives. Where does the bus driver live and on what road? नमस्ते जी। नमस्ते जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेशम सिंह हीर है। आप क्या काम करते हैं? मैं बस ड्राइवर हूँ। आप कहाँ रहते हैं? हैंड्सवर्थ वुड में रहता हूँ। हैंड्सवर्थ वुड में कहाँ? अंडरवुड रोड पर। The bus driver lives in Handsworth on Underwood Road. Underwood Road par. In next week's program, we'll be looking at largest film industry in the world, Indian cinema. And before then, you should look at units 1, 2 and 3 in the book which goes with the series. Also in next week's program, we'll be looking at the language you need to introduce members of your family. So until then, namaste. Khuda Hafiz.